Are so good. Huh? See, on the day of our orientation, we didn't able to communicate a lot. Though I tried to make you understood that I'm not the one who is gonna prepare you for the war. I'm the one who would be there on the battleground. Yes, yes, yes. So when you're gonna come into an intermediate, when you'd be in the final, you'll realize what I'm talking about. What is the war all about? But I have planned earlier. I don't used to have any lectures in the foundation, but this time I'm planning that every weekly or every fortnightly, there will be one review lecture from my end, whereby I can communicate to you about what you did in the last week or a fortnight period. What are the issues that probably you might be facing? You might not be able to communicate to the respective faculties that you can communicate to me. And I'll help you in that, whatever problem you're facing. At the same time, again, majority of my students used to tell me that I'm a good doctor in the terms of giving injections. You understood, no? Injections. Injections are needed time to time. Otherwise, we forgot why we have joined this. We start applying that self-liberalization policy. You know that self-liberalization policy? We all applied, no? At the time of joining, we are so strict to ourselves that even your parents is asking you to chal khana khane ke liye, hum bolenge nahi, I need to revise this. Once the revision is over, then only I will come. बाद में मम्मी बोलेगी कि थोड़ा पढ़ ले आज, तो बोलोगे नहीं पहला खाने दो, बाद में खाली पेट दिमाग नहीं चलता, वो सारी चीजें आती है. तो वहां पे ना वो रेगुलर इंजेक्शन चाहिए, विटामिन की कमी होती है. फिर तो ये विटामिन देने के लिए भी मैं फोर्टनाइटली, वीकली, डिपेंडिंग अपॉन द topics that you are learning. Obviously, other than math state, I can understand all the topics. I am, and I will be very poor in that. So I'll not try to become an oversmart in that. The rest of the subjects are quite a good. Fine. So normally when I meet for the first time to any student, whether it's of inter, final or foundation, wherever I'm communicating to anyone, no, first of all, I always would like to know about you. It's not about me. See, many times students used to ask when they are coming for the class, no, syllabus कब खत्म होगा? It's a very good question. Everyone should ask this. तो मुझे उसको पूछना पड़ेगा किसका, मेरा या तेरा? क्योंकि मेरा तो खत्म हो चुका, 10 साल से हो रहा है, तो मेरा तो सर्टेनली हो ही जाएगा. इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारा सिलेबस कब खत्म होगा. हमारा मतलब आपका. एंड मेनी ऑफ यू who might have came to meet me at our other location. So I think each and every one of those who came to meet me, I have continuously focused on one thing, and that one thing is regularity. आप जब भी मुझे मिलने आए थे ना, तो मेरा फोकस सिर्फ इसी पे था. देखो, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आए. एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आए. तो क्या अलग से हम कुछ करें जिससे कि हमारी पास होने के प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज बढ़ जाए. The only key factor of getting success in this examination is regularity, revising whatever you have done every day. So after spending at a foundation level, after spending 3-4 hours at a classroom, you need to ensure it is at your comfort zone, at your comfortable time. You must revise at least 2 to 3 hours for whatever has been done. And for the Sunday, you should have a plan to revise whatever has been done in the last week on a continuous basis. जैसे जैसे खत्म, जितनी बार आप करोगे उतना टाइम कम जाएगा. There is something called a learning curve effect. I don't know whether you're familiar with this term or not. I'll tell you. अगर मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, कॉस्टिंग का, अकाउंट्स का,
इनकम टैक्स का, जीएसटी का, पहली बार मैं अगर आपको दे रहा हूँ वो क्वेश्चन, तो पहली बार में शायद 20 मिनट जाएंगे। वही क्वेश्चन में बोलो वापस एक बार करो तो शायद अब 15 मिनट जाएंगे, 17 मिनट होंगे, 20 नहीं होंगे, 15-17 मिनट होंगे। वही क्वेश्चन में बोलूंगा तीसरी बार करो तो 10 मिनट होंगे। So every time when you are repeating the same task, this is again a part of our syllabus. There's something which is there as a part of our syllabus. When you are coming in an interno, there's again a part of our syllabus. The topic is learning curve. So when you are repetitively doing the same thing, when you are doing the same thing, every time you will require, every next time you will require lesser time as compared to what time you required earlier. So when you are into this revision, no, so ऐसा नहीं है कि भी जितना टाइम आपको 2 घंटे किसी टॉपिक के लिए देना पड़ा था तो रिवीजन वापस 2 घंटे देने पड़ेगा। ऑब्वियसली द टाइम रिक्वायर्ड वुड बी लेसर, बट व्हाट इज एन एडेड एडवांटेज व्हेन यू आर डूइंग इट रिपीटेटिवली? द कॉन्फिडेंस विद इन आवरसेल्फ विल गेट बूस्टेड। वरना क्या होता है फिर? वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्फ। सो प्लीज कीप योर रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ योर लाइफ असाइड and please ensure your 6 hours in a day, 3-4 hours in a classroom, 2 to 3 hours for the self study. हमारे पास 24 hours हैं, उसमें से 6 घंटे को डिडक्ट करके जो बचता है, एंड अगर संडे को क्लास नहीं है तो संडे यू नीड टू स्पेंड 6 hours, 4-5 hours minimum. Sunday is not an holiday, Sunday is for the revision. And you all decided to change your life. This is why you have joined, no? Because no one likes the difficult path unless until the outcome is also a bit different. तो हमें ये difficult path इसीलिए चुना है ना, क्योंकि we need to change our life. So that is what we require to do. If you want to change your life, this is something that we need to do. And being a professional, I'll be honest with you. So जितने भी बार मैं यहाँ से कुछ भी बोलूंगा ना, वो कुछ गलत नहीं होगा, जो हाइपोथेटिकल बातें वो कैसे नहीं बोलूंगा। I'll be honest with you. जैसे ना फिर आपको सब बोलते हैं अगर एक बार सीए में हो जाओ then शांति से बचे। Is it so? So अगर ऐसा होता तो मैं सुबह 11-12 बजे ऑफिस आता, 4-5 बजे चला जाता। मैं सुबह आता हूँ ऑफिस 7 बजे एवरी डे, और 9 बजे से पहले शायद ही जाता हूँ। एंड स्टिल आई फील कि आज ये काम नहीं हो पाया, कुछ चीजें थी जो आज मुझे कंप्लीट करनी थी, नहीं हो पाई। बहुत सारे दिन ऐसा होता है कि मुझे कुछ काम कंप्लीट करना था, वो नहीं हो पाया, इवन दो आई एम वर्किंग फ्रॉम 7 AM till 9. Now what makes you going, that is again very important. What makes me going is because I'm regular, because I'm up to date, I'll earn out of it. I'll get the satisfaction. आप समझो, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन जो आपने किया है वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आपको वो मोटिवेशन देगा या डीमोटिवेशन? मोटिवेशन देगा। अब नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन आया तो that will demotivate you, obvious सी बात है। अब वही तो सिंपल फंडामेंटल है लाइफ का। There are two approaches. I'm practicing into GST. So there are two approaches which any professional could apply. This is applicable to you. Now you take it as a student. Exam is your client. I'm practicing chartered accountant, so from that point of view, being a life of professional, there are two approaches which I can follow. The first approach would be, I'll wait the client to come. I'll wait client to ask me the question, and then I'll decide अब पढ़ूं मैं. That's the first approach. Second approach, I'll be ready irrespective whatever question client is throwing in front of me. I'll be able to answer on the spot. Now, out of two the situations, what do you think? Who would be more successful? The one who will wait for a client to ask a question and then to read, or the one who is ready? The one who is ready, obviously. Now you change your client with your examination. So I'll think in a way that what a client possibly facing a difficulty, what are the gray areas?
of the text system. Let me focus on it. Let me write some article on it. Let me arrange some lectures on it. Obviously, classroom में तो हम पढ़ाते हैं, लेकिन मैं वो ज़्यादा ग्रे एरिया में classroom में नहीं जाता, because unnecessary things becomes complicated in the classroom. तो मैं क्या करता हूँ फिर जानबूझ के ना किसी अच्छे फोरम में, सीए इंस्टीट्यूट हो गया या जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, या ऑनलाइन मैं खुद का ही पोस्ट कर दूंगा that on this particular day I will be taking lectures or I will be sharing my thoughts on this topic. The topic is a gray area. Now what is an advantage? The moment I'll announce it, then I have to meet the expectation of the audience, which will make me going to prepare in a better way. So therefore, what again we have planned is, we'll announce the test well in advance, because since it was the first week of demo, we didn't announce the test yet. But after a week, once considerable amount of syllabus is getting over, we announce the test in an advance, where again you can ensure yourself that I want to be in top 3. So एक चीज दिमाग में क्लियर रखो कि ना आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि अगर बड़ौदा में से, वैसे तो 100% रिजल्ट है फाउंडेशन का सिंस इंसेप्शन, लेकिन अगर बड़ौदा से एक स्टूडेंट पास हो रहा है तो एक वुड बी मी. वो तभी हो सकता है, सिर्फ बातें करने से नहीं होता है. You need to give a time for it. And there is no doubt about it कि ये तुम्हारे 12th या बीकॉम जो कर रहे हैं साथ में, इससे कंपेरेबल ही नहीं है चीजें. आप प्लीज अपना पास रिजल्ट, whether it was good or bad, do not keep that thought in your mind. You know, I was very good, so it's fine with me. I'll be able to manage. And if I was an average, it would be difficult for me. क्लासरूम में हम जो पढ़ाते हैं, आप घर पे रिवाइज करो. आपके अगर बेसिक्स थोड़े क्लियर हैं तो आई डू नॉट हैव एनी डाउट इन माय माइंड कि आपको समझ में नहीं आए चीजें, आप रिवाइज नहीं कर पाओ. अगर आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ही पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स वुड बी देयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर परसेंटेज दैट यू माइट हैव गॉट इन योर 12th. कोई फर्क नहीं पड़ता. फाइनल में the past student who got all India 5th rank, all India 10th rank, उनका स्कूल में भी कभी रैंक नहीं आया था. बोर्ड भूल जाओ तो मतलब डीटी में 90 मार्क लेके आते हैं, कितने? वो कभी आते नहीं है स्कूल में भी. वो यहाँ पे क्यों लेके आते हैं? वो इसीलिए because of this kind of communication, and that is where I personally believe that our earlier teacher were lacking. They're focusing on completing a syllabus. They're focusing only on teaching aspect. Now, this is something which is reality. After completing your CMA, you will be directly going into an industry or going into the market where you are supposed to work. So, if I'm not developing you from that perspective, that I think I'm missing something. It's not just passing your examination. You understand that? People don't earn on the basis of marks that they have got. People don't earn in that proportion. The student who never got even a rank in a CMA is earning more than what ranker was earning right now. So there are certain aspects also, no, because अगर वो rank ही criteria होते, number ही criteria होते, तो सारे बच्चे same वही proportion में earn कर रहे होते. वो भी नहीं है. मतलब there is something which you need to change along with your studies also. Your approach, your presentable skill, your communication skill. So by keeping all this thing in mind, I did certain drastic changes in our curriculum, not just teaching. And that is the reason why I decided to have this weekly or fortnightly communication to you, whereby even I have planned, we'll be having a kind of an industrial visit where we'll be going to the company. We'll see how the company functions. Obviously, depending upon the permission of the company, but certainly there were so many clients of mine whom I can ask and request so that they can allow. At the same time, you are going to become the cost accountant. So I'll give you certain tasks also to
make, procure, sell at the lowest cost, at highest price, and earn some out of it. There's also part of our job, no? That would be kind of in combined. So there are a few from the final, there are a few from the inter, there will be a team who would be given this task, and then we'll see who is earning more. All these are the practical approach, which we have to imply. This is something which we are not being in class or supposed to do. Last time, this thought came in my mind, so I decided when we went pre-COVID की बात कर रहा हूं मैं, सब पिकनिक की बात कर रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने भी बोला था 3 ग्रुप बनाए थे, तीनों ग्रुप को सेम डेस्टिनेशन, सेम आइटनरी के साथ मैंने टास्क दिया कि भाई कौन चीपेस्ट रेट में प्लान करके लाता है. You getting it? So they'll work, they'll understand how the things happen, how the money goes out of your pocket. This is what you're going to do for someone else. You cannot think कि ये मैं किसी और का पैसा मैनेज कर रहा हूं. You have to think as if it's your own money. तभी तो सक्सेसफुल होते हैं. ठीक है? So what I wish, I would like to know something about you also. There are certain basic things which I would like to know, which I am always eager about. Obviously, first of all, is your name. Then the second question, there are only 2 things. Why you joined CMA and what do you want to do after becoming CMA. वो नहीं सोचते हैं. CMA करना है वो पता है, उसके बाद क्या करना है. So again, this मैं जो बोला ना, अनाउंस करो क्या करोगे, तो ऑटोमेटिक योर सबकॉन्शियस विल स्टार्ट वर्किंग बिहाइंड इट. ठीक है? So we'll start with you. You need to speak your name, why you joined CMA, and what you want to do after becoming in CMA. My name is Shekha. I wanted to do CMA because I wanted to do it now. And after doing CMA, I would like to join any company. I would like to work as an employee in initial stage. After that, I'm do techniques. Once I get the experience. Good. What happens now? This is the real fact I'll now tell you. The moment you join the company, they are going to pay you 40,000-50,000 per month. So you work at least for 4-5 years to gain the knowledge. By that time, your salary would be 1.5 lakh per month. And you think after that, you will decide to come into the practice and go and find out the clients. By keeping aside 1.5 lakh, you're getting every month. So once you're going in that direction, coming back to the practice is 1 out of 500. You could be that 1 out of 500, but this is normal ratio which we have seen. And again, when I'm asked about the company, which kind of industry you would like to prefer? There's so many kind of industries. What do you want to do in that company? Whether you want to join indirect tax department, whether you want to join as a cost controller, whether you want to work in accounting and reporting department, whether you want to work in direct taxes, whether you want to work in accounts payable. There are so many wings within this finance. Whether you want to work as a treasury where you are going to manage the forex and overall financial management of the company. Okay. I also achieve my success in the professional course. Companies and my best and in my decision. Whenever a problem arises, I can also solve it. So what is the job? Good. Okay. So there are 3 professional courses that you know after 12. CA, CMA, CS.
Why CM? Who told you that? I was the most dumb in that. I told you on that day, if I can become, anyone can become. I may lose my student, but this is not a fair question which is I should ask, no. But as I told you, I'll be honest. I did say because I wanted to do it. Because I didn't know at that point of time that with the same syllabus, a similar course is available which you can complete in 2.5 years or 3 years max. I didn't know that. My father's friend was a chartered accountant, so who told my father that you should throw him into this CA course. I was no one to decide. You all have that freedom. It's very good. You all know that you're going to become CMA, what CMA does in the company. You all know that. I'll be honest again with you that when I joined CA Foundation, which I failed miserably, I even didn't know who is a CMA or sorry, who is a CA. So after CA Foundation, मैं पास करूंगा तो इंटर होगा फाइनल होगा वो भी नहीं पता था. आई बी ऑनेस्ट वो बाद में ज्वाइन करने के बाद पता चला. मेरे को वो भी नहीं पता था इसमें क्या होंगे. नासा में जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, पायलट बनेंगे, क्या बनेंगे नहीं पता. That is the reason why I failed. I didn't know in which direction I'm going. I joined because my father wanted me to join. And then I realized this is interesting actually. Then I realized what chartered accountant could do with the numbers. And then वो थोड़ा ego भी हट हो गया ना जयकांत सिकरे वाला. तो जो फेल हुए तो फिर that is the reason why after become also I joined CA. ये फेल क्यों हुआ? हाँ? Fine. Okay. You want to be? Finance means? Can you define finance? Both are different. Direct tax and finance are different, no? What I understand finance is arranging a finance for your client. That is again a job which a professional can do. So we can understand the projection. That is what we're going to learn, no? Projection. And how the company is going to function. What is your product? At which cost you will buy? At which price you will be able to sell? What will be your profit? And that projection, project report will submit to the bank and get loan for your client. That is a financing. So direct tax, financing, both are your interest area. Then you will decide at the end of, when you are in a final, you will decide where I am good at. Your interest, देखो ये होते हैं ना कुछ सर्कल्स होते हैं जिसके बीच में अगर आप आते हो तो वही चीज आपको करनी चाहिए. It is not your interest only which will decide. Along with your interest, you need to bring another circle where you are good at. और वहां पे जो सेंटर आता है ना, समझ में क्या बोल रहा हूँ? We are, what I like to do is बैठ के गप्पे मारना. What I like to do is बैठ के गप्पे मारना. Where I am good at talking also. So अगर ये दो विंग मिक्स करे तो वो हो गया बैठ के गप्पे मारो, लाइफ बन जाएगी. You need to bring earning out of that. तो ये तीनों सर्कल जहां इंटरसेक्ट होते हैं, where I am good at, what I like to do, plus I'll earn out of it, वो जहां इंटरसेक्ट होता है वो चीज हमें करनी चाहिए. सिंपल सी बात. So if I know if I'm good communicator, I need to become a teacher so that I can communicate. I used to take a part in when I was in a school. No, I used to take part in plays and all that. So I know I'm good at this. But after becoming chartered accountant, I cannot do that. No. नाटक करवानू तो कौन जोआ. So I had to find out something because I need a stage where I can perform. Now performing with knowledge, दो advantage. तुम्हारी पढ़ाई भी होगी because after becoming CA तुम वैसे नहीं पढ़ोगे. तुम्हें अगर प्रोफेशनल को पढ़ाना है तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. तुम भी अपडेट होंगे, पैसे भी मिलेंगे उसके. स्टेज तो चाहिए ही था where I'm good at, which will help me earning also. Do that. That does not mean मैं बन गया तो आप भी क्लास चालू कर दो. देखना पड़ेगा ना your communication skill. मंथन. I want to pursue professional course, so that's why I choose it. And in the initial stage, I will do
future I might do that. I might, that itself shows that I'll not. यहाँ पे होता है ना I might. लाइफ में कितनी भी बार आप चेक कर लेना पास्ट में जाके, जहां जहां तुमने बोला है कि आई माइट डू दिस, दैट मीन्स यू आर नॉट गोना डू दैट, यू आर सेइंग जस्ट बिकॉज आपको सामने वाले को निराश नहीं करना है. फाइन. क्या? ओम. वाह वाह. मतलब ध्यान करूँ जाने का तू बोलेगा. You wanted to do professional course. Everyone, I think, that is a common answer, no? What do you want to do? See, yet not decided is also an answer. So many are relaxed now. Okay, fine, good. What do you want to do? That not decided. Your face is saying. Soon. Akshar. It will be loud, no? We are into the country where there are 130 crore. So if you are low and slow, you're gonna miss the bus. You need to be loud and clear. Okay, we can show your creativity. I'm telling you this. What do you want to do after this? Thinking of your act. Okay, I got you. Thinking of. My name is Moshe. I choose CMA because I'm interested in accounts. That's why I choose CMA. Good. एक चीज बताऊं ना, मैं मेरे को रोज, because I'm into the practice also ना, every day, almost every day I'm getting 2 to 3 calls. They're asking me कि मेरे को CMA चाहिए. अब मैं बोला नहीं है मेरे पास, उतनी स्कैरसिटी है. तो जितना जल्दी बनो तुम राइट टाइम पे एंटर हुए हो, तो 2.5-3 साल के अंदर ना जो बूम आने वाला है इकोनॉमी में, जो डिमांड बढ़ने वाली है, यू हैव नो आइडिया. बट दैट डज नॉट मीन कि आप जैसे तैसे बन जाओ, बिकॉज इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग समथिंग व्हेन दे आर अपॉइंटिंग प्रोफेशनल्स. सो व्हेन दे आर अपॉइंटिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, देन दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग. जैसे कि आप आज यहाँ पे जैसे बैठे हो, जैसे बिहेव कर रहे हो, जैसे मुझसे बात कर रहे हो या किसी से भी बात कर रहे हो, दैट रिप्रेजेंट योर फैमिली. हाँ, क्या संस्कार दिए आपके माँ बाप ने आपको. ऑब्वियसली बात है ना, जिस तरीके से बात कर रहे हो तुम किसी से भी, दैट implies from what kind of family you are coming. Similarly, when you're joining a company, you are not joining because of your parents, because of your caste. You are joining because of that prefix CMA. And when your behavior after becoming your CMA is not professional, you are not losing your value, you are losing the value of the whole fraternity. So your behavior from the day when you entered into this fraternity should clearly distinguish yourself from the other who are not doing it. Your thought process should be different as compared to those who are doing just because. हाँ, वो एक चीज अपने स्वभाव में लेके ही आना. That now you are no more kind of a normal. समझ रहे हो? एबनॉर्मल मतलब सिंग नहीं निकले अपने, लेकिन बिहेवियर क्या होना चाहिए किसी प्रोफेशनल का. मैं यहाँ पे फंकी टी शर्ट पहन के आ जाऊं, हाँ, रणवीर सिंह जैसे कपड़े पहन के आऊं यहाँ पे, मैं अपना टाइम आएगा करके बोलने चालू करूं मैं, इज इट सूट? विल यू लाइक इट? द सेम हैपेंस व्हेन यू कम्युनिकेट in an unprofessional way, even after becoming a CMA students. So you need to distinguish yourself, differentiate yourself from those who are not doing this. So you need to learn to say no even to your friends, even to your family. When they're asking के चलो फ्री से पिक्चर जो नहीं है. See, बहुत बार मैं ऐसा लगता है कि मैं इसको बोलूंगा, अगर है मेरे भी फ्रेंड्स थे जो
सी नहीं करते तो मेरे को बोलते थे चल आज घूम के आते हैं, मतलब लड़कों में ज्यादा होता है शूंगर रात में फरवा, दैट हैपेंस व्हेन यू से नो टू देम। एंड वो बोलेगा क्यों, मेरे को पढ़ाई करना है, आज का रिवीजन मेरा बाकी है। बोले तो पागल है क्या, ये बोल ही नहीं सकते ना, लड़के बोल सकते क्या, किसी फ्रेंड ने जब बोला कि चल घूम के आते हैं, चल मूवी देखने जाते हैं, अब उसको ऐसा आप बोल रहे हो तुम कि नहीं आज નું रिवीजन મારું બાકી છે ભાઈ, હવે કાલે કરી લેજે ને, मतलब આપણે કહી જ ના શકીએ, हम बोल ही नहीं सकते ये चीज। बट प्लीज अंडरस्टैंड, आपको ऐसा लगेगा कि उसको बुरा लगेगा क्योंकि मैं सीए में कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा यार ये खाली खाली शो ऑफ कर रहा है। बट ट्रस्ट मी, initially he might feel that, but gradually after 2-3 times when you're saying no, he will start valuing your time. You understand? Then he'll realize that he's saying no to me and he know that he's a very good friend of you, and still if he's saying no, that means the friend will understand that this is also important to him, CMA is also important to him. And those who are not understanding, those friends who are not understanding that the CMA is important to us, they are not friends telling you. They are not friends. They basically want that since they are not doing it, you should also not focus. No one else in this world except your parents and your teacher is interested in your growth. This is the fact that you need to understand. No one else is interested. ये 3 लोगों के अलावा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. Everyone need their comfort. बाकी किसी को फर्क पड़ता है, तो ये दिमाग में रखना. तो you need to learn to say no अगर चीजें हमारी बाकी है तो. There is a course called the CMA and development general and course in commerce. What do you want to do after? How are you going to do that? What do you want to do? Firstly, I will do the job and then the Business. Very good. What business you are thinking? I did see being a chartered accountant, no? The day when I decided to come into the practice, मैंने बोला ना ये शपथ आज फिर से एक बार ले लेता हूँ. I'll never lie. So the day when I decided to join into the practice, I was coming from very middle class family, so middle class that I used to read at this HM library. I'm staying at OP Road. तो जब वापस जाना हो ना, आने के टाइम पे तो किसी फ्रेंड्स के साथ तुम आ गए हैं, जब वापस जाना है तुम्हें, तो तब ना वो जो रिक्शा शटल वाले होते हैं ना, वो 5 रुपए में OP रोड पे तो ड्रॉप कर देते थे. वो 5 ही रुपए होते थे. अगर तुमको शाम को भूख लगी है और खाना है तो ये जगदीश वाले के पास पफ मिलता था 5 रुपए का, वो बड़ा वाला. तो अगर बहुत भूख लगेगी तो खा लो, तो शाम को जाना पड़ेगा पैदल. Getting in that stage I did my CM and I'm very happy for that. क्योंकि अगर पैसे होते तो शायद मैं इतना सीरियस भी नहीं होता कि मुझे ये क्यों करना है. I wanted to change my life. I am not okay with this average life or below average life. मुझे अगर कुछ चीजें चाहिए, ये मेरे थॉट प्रोसेस में बता रहा हूँ, अगर मुझे कुछ चीज चाहिए तो money should not be the constraint. That was my fundamental principle, and that is why I want to become CA, want to earn, and within that I'll find out where I'm good at. So I started practice also, and because I know that I'm not good employee. I am knowing this from the very first day that I'm not good employee. I cannot become good employee. That irritates me. So the day when I decided to come into the practice, no, there was a job offer from Reliance. So my father, when you're coming from this very lower middle class family, there is only one Bajaj scooter at your home. My father was having this touring job, so अगर वो नहीं है तो मुझे वो स्कूटर मिलता है with so many terms and conditions. तो उस टाइम पे जब जॉब के लिए तुम मना कर रहे हो, बोल रहे हो मेरे को प्रैक्टिस करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है फैमिली बोलेगी यार ये क्यों कर रहा है, जॉब कर ले, अच्छा सैलरी है. उस टाइम पे मतलब in 2010 I become chartered accountant.
उस टाइम पे 1 लाख रुपए पर मंथ मिलता था एंड द एरिया वाज आल्सो वेरी गुड, मर्जर एंड एक्विजिशन. मैंने से नो आई एम नॉट गुड एट दिस. मैं 1-2 साल शायद कर लूंगा, लाइफ लॉन्ग नहीं कर पाऊंगा. एंड देन देयर इज नो यू टर्न. सो आई डिसाइडेड टू come into the practice. After coming into the practice, obviously practice coaching, both I started in 2011 itself. I started being a teacher for CA final. Along with that, because of, as you are saying, no business, I wanted to have, मेरे को ना 2-3 चीजों का बहुत क्रेज था. सीए का तो था ही, बनने के बाद प्रैक्टिस करना है, टीचिंग का भी. एक तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, क्या एक टर्म है इंपोर्ट एक्सपोर्ट. मेरे को बहुत क्रेज था उसका. तो मेरे को एक्सपोर्ट करना है, कुछ भी करना है एक्सपोर्ट करना है. और दूसरा एक क्रेज था मेरे को टेक्नोलॉजी, और तीसरा था फूड. दिख रहा है ना, नॉट जस्ट ईटिंग, मेकिंग, खाना खिलाना. दैट वाज आल्सो माय काइंड ऑफ फैंटेसी सॉर्ट ऑफ थिंग. सो देन वी टुक ओवर वन कंपनी. एक कंपनी खरीदी, टेलीकॉम कंपनी. We did export also. I started a restaurant also. Export to technology company में पैसे कमाए अच्छे खासे. रेस्टोरेंट में 25-30 लाख रखी भी हैं. So therefore I'm saying you should try. था क्या 5 रुपए ना, जब पढ़ रहे थे तो क्या था. So unless until वापिस 5 रुपए की पोजीशन में जब तुम नहीं आते ना, तब तक you are जनरेटिंग पॉजिटिव कैश फ्लो. और ये सब चीजें तब करता था जब बीटा फैक्टर रिस्क बहुत हाई था मेरा. क्योंकि अगर एक चीज गलत हुई, और काइंड ऑफ रिस्क दैट यू आर टेकिंग, थिंग्स आर इफ नॉट इन योर फेवर, यू वुड बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. और वही चीजें होती है जो एक्चुअली हमें मोटिवेट करती है, जो सोने नहीं देती. समझ रहे हो. तो ये जो क्लास दो मर्जर हुए ना, उसका भी रीजन यही है. इट इज नॉट जस्ट इन बिजनेस डिसीजन, the decision that we can reduce our own time from coaching and doing certain more things whereby we can give better cost accountant to the society. वरना हम दूसरे को जरूरत नहीं थी मर्जर करने की, थी sufficient food. लेकिन क्या इससे टाइम बचता है. टाइम बचता है तो तुम कुछ अच्छी चीजें, जैसे ये हम कर रहे हैं ना, this sort of communication we are having once in a month. पहले जो मैं बोल रहा हूँ अभी, वीकली या फोर्टनाइटली तो करेंगे ही करेंगे. लेटेस्ट फोर्टनाइटली, लेकिन वीकली का ही मेरा तो प्लान, एवरी वीक. सो obviously when you want to do the business, again this is something, no, this course is something which will teach you every aspect of your business, how business will run, not the technological aspect, but how the business will run. And I'm telling you, out of 100, 70% business fail because of improper financial management. Not because of poor technology, not because they are not getting in customer, not because they are not getting raw materials. They fail because of improper financial management and financial management. This course will teach you that. So chances of becoming good at this will actually help you to become a good businessman. Shark Tank देखा था ना सबने, वो बोट वाला जो था वो कौन है. हाँ तो है ना. तो अब उसमें ना नॉलेज, अब अपने लेवल में आप कितना ऑप्टिमम लेवल पे जा सकते हो, उस पर डिपेंड करता है. सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है. कितने आइडिया तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, कितने थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते हैं, और वो कितने थॉट्स को तुम एक्शन में कन्वर्ट करते हो. सिर्फ थॉट तो बहुत सारे आते हैं, उस थॉट में से कितने तुम एक्शन में कन्वर्ट करते हो, दैट एक्चुअली विल डिसाइड कितना सक्सेसफुल तुम होंगे. थॉट तो बाकी रोज आता है, पढ़ना है, उसको एक्शन में कन्वर्ट किया क्या नहीं किया, दैट थॉट इज ऑफ नो यूज. और ये थॉट में से तुम्हें डिसाइड करना होगा कौन से थॉट को पिक करना है. थॉट तो घूमने का भी आता है, कौन से थॉट को पिक करना है, दैट इज समथिंग विच विल डिसाइड कि आपका कैरियर कौन से डायरेक्शन में जाए, है ना. I opted for CA because I wanted to challenge myself. Because till 12th I was an average student, and I thought I want to challenge myself with some professional course. So I opted for CMA, and I had some interest in taxation earlier before. So I thought I should
and I want to know. You want to do job? Good. फिर चलेगा हिंदी में बोल. लाइफस्टाइल चेंज करनी है ना. गुड. लग्जरी लाइफ. आईफोन चाहिए किसको? एमआई का फोन चाहिए. दोनों है मेरे पास. सो मैं इसीलिए मैंने रखा है कि देख ये था तू और ये भी हो सकता है. तो ऐसा नहीं होता है प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूं तो कि एक बार मैं वो लेवल पे आ गया उसके बाद वहीं पे रहूंगा. ऐसा नहीं होता है. अगर पहला मूवी रणवीर सिंह का अच्छा आया तो उसका मतलब वो नहीं होता है नेक्स्ट मूवी में वो काम नहीं करेगा. एक्सपेक्टेशन और बढ़ती है लोगों की तो और अच्छा काम करना पड़ता है. आप उल्टा हम करते हैं. अच्छा 12th में आ गए परसेंट अभी ठीक है. तुम एक बेंचमार्क सेट किया अभी नेक्स्ट उसके आगे होना चाहिए उसके नीचे नहीं होना चाहिए. हाँ. वांट टू डू जॉब. You both are from Rajasthan, no? And after CMA, what do you want to do? Job. See, अभी ना बहुत बार हम this is again my personal observation to the life. जब हम इंस्टा खोल के देखते हैं तो बहुत सारी बुक आती है कि ये बुक पढ़ो. You want to change your life? Read this book. बुक में कुछ है क्या? बुक में कुछ नहीं है. बुक तो बोलेगा सुबह 5 बजे उठ के पढ़ो. तुम पढ़ोगे. हम बुक इसलिए देखते हैं कि शायद मुझे इससे मोटिवेशन मिल जाए हार्डवर्क करने का. लेकिन वो बुक खरीदते हैं पढ़ते नहीं है. फिर खरीद भी लेंगे शायद पढ़ेंगे नहीं. तो मोटिवेशन ना किसी बुक में नहीं है. यू जस्ट नीड टू लुक अराउंड. ये क्लासरूम में ही जाके अपने फ्रेंड्स जितने होंगे ना उनसे पूछो तुम्हें मिलेगा मोटिवेशन कि अगर ये बंदा जैसे कि मैं आपको बोलूं अगर ये बंदा राजस्थान से सिर्फ यहाँ पढ़ाई करने के लिए आ सकता है and that means what both are saying that they want to change their lifestyle. They are not happy with an average lifestyle. So ऐसा नहीं है वो यहाँ घूमने आए हैं और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा नहीं है ना. अगर ऐसा होता है तो why he want to change his life? He is happy with his life. तो अगर वो यहाँ के पढ़ रहा है वो यहाँ पे इनकन्वीनियंस फेस करके भी उसके पास कन्वीनियंट ऑप्शन था ऑनलाइन वाला फिर भी उसको यहाँ के अगर पढ़ना है अगर उसको इतनी डिफिकल्टी है और ये कर रहा है तो उसके कंपैरिजन में हम जो बड़ौदा में ही रहते हैं ना उनकी लाइफ हाईवे है. गड्ढे तो इसके रास्ते में. अगर वो कंप्लेन नहीं कर रहा है तो हमें तो कोई राइट ही नहीं है कंप्लेन करने का. तो एक्सक्यूज खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छे होते हैं. बाकी सामने वाले को पता ही होता है कि अगर मैं फेल होता हूं तो मैं क्यों फेल हुआ. तो क्या हम अपने आप को जस्टिफाई कराते हैं. ऐसा तो है नहीं एग्जाम में कि सबके रोल नंबर के बलून लगे होंगे फिर प्रेसिडेंट साहब आएंगे गन लेके जितले बलून फूटे वो सब पास बाकी फेल. ऐसा होता है? नहीं होता ना ऐसा. तो જેટલું નાખો એટલું ગળ્યું થાય. फाइन. क्या? सुफियान. To improve your standard of living. What do you want to do for that? Job. આ બધું બધાની સામે તમે બોલ્યા છો તો યાદ રાખજો. ये सब मैं क्यों बुला रहा हूँ क्लासरूम में. मैं बोला ना अनाउंस करो. याद करो वो दिन जब तुमने ये शपथ ली थी. तो फिर जब पढ़ने बैठो ना तो जब ये दिमाग तुम्हारा बोल रहा है कि कंटाड़ो आवे छे तो आ याद करजो व्हाट यू सेड इन दिस क्लासरूम कि भी क्या चाहिए. एंड प्लीज अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रेन फंक्शन. ब्रेन नेवर लाइक टू कॉन्सेंट्रेट. वो उसके लिए है ही नहीं. ब्रेन का काम कंसंट्रेशन के लिए नहीं है ना. हमको यही सिखाया गया है. हमको तो यही पता है ब्रेन डू नॉट लाइक टू कंसंट्रेट. इसलिए तो पढ़ने के लिए कंटाला आता है.
It does not like to concentrate. It like to keep on thinking different thing. तो जैसे तुम उसको पढ़ने के लिए बोलोगे खुद को, अपने आप को, अपने दिमाग को, लेट्स स्टार्ट रीडिंग, तो वो पहली 10 मिनट तो इतने नाटक करेगा, मतलब थोड़ी देर के लिए तुम मूवी में घूम के आए, थोड़ी देर के लिए तुम फ्रेंड्स के साथ चले गए, थोड़ी देर के लिए कुछ और ख्याल आ रहे हैं दिमाग में, इसके अलावा बाकी सारी चीजें, बिकॉज इट डज नॉट लाइक टू कॉन्सेंट्रेट। तो 10 मिनट ही होता है। अपने सबने एग्जाम दिए है तो होता है सबके साथ। ये क्यों होता है? बिकॉज ब्रेन डू नॉट लाइक टू कॉन्सेंट्रेट। ये दिक्कत कब नहीं होती है? डे बिफोर योर एग्जामिनेशन होता है। ये क्यों नहीं होता है? बिकॉज यू हैव इन्फॉर्म योर ब्रेन, कीप एवरीथिंग असाइड, दिस वीक यू आर नॉट डूइंग एनी नॉनसेंस। तो अगर तुम हर रोज बोलो तो वो हर रोज उसी तरीके से काम करेगा, लेकिन हम ही उसको बोलते हैं ठीक है थोड़ी देर ध्यान दे, तो रिक्वेस्ट से वो मानेगा ही नहीं कभी उसको क्लियर। और ये हैबिट हो गई है हमारे बचपन से। हर एक बंदे ने स्कूल से हमको बोलते आ रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट। नो वन इज टीचिंग हाउ टू डू दैट। अब मैं बोलूं ना कुछ चीजें तो आपको लगेगी यार सर थोड़े से एंटी होते हैं। एक सिंपल चीज, अगर तुम रोज 15 मिनट ये कर रहे हो ना, you try this, try at least a week. I have seen the changes in myself, because if I'm saying that becoming a very average student, becoming a CA is okay, but doing a business, running a business, doing the things regularly which I should do, वो एवरेज बंदे की डिफिकल्टी इसीलिए होती है कि वो कॉन्सेंट्रेट सब चीजों पे करने जाता है, एक पे नहीं कर पाता है। तो इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया है। 15 मिनट एवरी डे जो ध्यान बोलते हैं ना, दिस इज नॉट रिलीजियस थिंग। यू नीड टू शट योर आईज, डोंट जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, दैट्स इट। उससे फायदा क्या होता है? दिमाग इज लाइक एन कंप्यूटर। कंप्यूटर में रैम भी होती है, हार्ड डिस्क भी होती है, लेकिन जब कंप्यूटर हैंग होता है वो हार्ड डिस्क की वजह से नहीं होता है, वो रैम की वजह से हो जाता है। सो मेनी थिंग्स डूइंग एट द सेम टाइम, सिस्टम विल गेट हैंग। क्या करते हैं हम उसको? रिस्टार्ट, रिफ्रेश, क्लीन योर रिसाइकल बिन, क्लोज द टेम्पररी प्रोसेसेस which is running, and it will start function. ये 15 मिनट के ध्यान में वही चीजें होती है। तो 15 मिनट बैठ के ध्यान करना मतलब वो नहीं होता है कि तुमको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, आएंगे सपने में, बेटा डन, कल से तुझे कोई चिंता नहीं करने की है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मिरेकल नेवर हैपेंस। तो फायदा क्या होता है? जितने थॉट आने थे उसके लिए तुम 15 मिनट बैठ गए, तुम्हारा रिसाइकल बिन खाली हो गया। तो जो बाद में आने थे रैंडम, वो तुमने एक बार बैठ के ब्रेन को ट्रेन किया कि थॉट को डिलीट मार, ब्रीदिंग पे ध्यान दे। ये ब्रीदिंग इज नॉट रिलीजियस ना, मतलब मैं क्रिश्चियन हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, एक ही चीज करते हैं सब, ब्रीथ तो करेंगे। तो हमको सिर्फ उस पर फोकस करना है। ऑटोमेटिक थॉट विल कम, हटाओ यहाँ पे लाओ, हटाओ यहाँ पे लाओ, हटाओ यहाँ पे लाओ, दिस इज प्रैक्टिस। एंड वो थॉट जो आने वाले थे वो आ भी गए, तो तुम्हारा रिसाइकल भी क्लियर हो रहा है। तो जब तुम पढ़ने बैठोगे ना तो थॉट उतने सारे भी नहीं होंगे, क्योंकि जो आने थे वो आ गए सुबह 15 मिनट में। तो प्रैक्टिस दिस एटलीस्ट अ वीक एंड देन रियलाइज दैट इट एक्चुअली इंप्रूव्स योर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऐसे इंप्रूव होता है, एक एक घंटा नहीं बैठना है, वो तुम बैठ ही नहीं सकते हो। हाँ, तो तुम ये वो विपासना वाला तो तुम सोच ही नहीं सकते हो। मैंने वो भी किया है 15-15 घंटे दिन के, जिसमें 4 घंटे ऐसे होते हैं जहां पे हाथ की उंगली भी नहीं हिलती, हाथ की उंगली भी नहीं हिलती। तुम 15 मिनट ट्राई करोगे, मैं तुम्हें लिख के दे दूं, 5 मिनट के बाद लगेगा हाँ अब तो हो गई 15 मिनट, गारंटी देता हूं, बिकॉज दैट हैपेंड टू मी। 15 मिनट आंखें बंद करके बैठ के जरा सोचो ये ब्रीदिंग वाला, 5 मिनट के बाद तुम्हें लगेगा यार मिनिमम 1 घंटा हुआ होगा। और ये 15 मिनट में, बिकॉज ब्रेन डू नॉट लाइक टू कॉन्सेंट्रेट, इट अगेन विल ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट। कैसे?
एक्चुअली ना तुम्हें मच्छर ने काटा है, ना तुम्हें चींटी ने काटा है, ये इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। छोड़ इसको, ध्यान दे यहाँ पे, क्योंकि तुम थॉट पे नहीं ध्यान देते हो तो कुछ और करेगा इल्यूजन। अब यहाँ पे किसी ने काटा ही नहीं है तो काय की खुजली, आने दो उसको, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ट्राई करना ही है, सच्ची बोल रहा हूँ, 15 मिनट, एक हफ्ता, फिर नेक्स्ट वीक वापस से जब मिलेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा। और ये करना है तो ये करना है, ये कंपलसरी नहीं है, ये खुद के लिए है ना, ये मेरे लिए तो है नहीं। सीए में होके तुम लाइफस्टाइल तुम्हारी चेंज करने वाले हो, मेरी तो करने नहीं वाले हो, तो तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ। वेरी गुड, और क्या बोलूं? भाई पार्टनर तारो जो ले बराबर बिजनेस। वेरी गुड। I can see it because You want to do job? My English lectures were I like to because my cousin he also was here. Whenever we talk about CM, I like that way that we summarize that CM, and I also like that's why I choose that. What do you want to do after? I want to be a I want to be a job. You want to do a job? Job and also as an investor. Stock market or angel investor? So I hope you like this session. This sort of session should be there at least once in a week, where we can communicate with each other. We again try to recall why we joined this. And ये हफ्ते का इनपुट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मैंने जो बोला ना, यू ज्वाइन अ प्रोफेशनल कोर्स। तो अब ये हफ्ते से जो हर हफ्ते में कुछ दूंगा जो तुम्हें तुम्हारी लाइफस्टाइल में ऐड करते जाओ। तो ये हफ्ते से सबसे पहले जो चीज करनी है क्या, योर बिहेवियर शुड बी लाइक CMA स्टूडेंट। सो वैल्यू योर टाइम, ensure this regularity. So when you're talking to someone, they should understand that I'm talking to future CMA itself. ठीक है, तो ये हफ्ते से तो ये इंप्लीमेंट करना ही। और जो मैंने बोला हफ्ते वाला तक 15 मिनट वाला, अगर कंफर्टेबल हो तो करना, and then you can share. At the same time, if now relating to the coaching aspects also, if anyone wants to share anything relating to the, see, there is always a scope of improvement. If there is a scope of improvement for the batting of Kohli and Rohit Sharma, there is always a scope of improvement from our side also. So wherever you feel, whenever you feel, be open to it. Please communicate first to the respective faculty itself in the classroom, so that if you're not understanding any particular topic, and that can happen to any of the faculty, ये मेरे साथ भी हो सकता है, किसी भी faculty के साथ होता है, because everyone have their own unique style of teaching. So you might be comfortable with me, you might not, someone might not be comfortable with my way of teaching, so that can happen to anyone. So whenever you are not understanding, and that's specially going to happen in the theory subjects, I'm telling you this. Whenever the theory subjects are being taught, no, it is उसके DNA में ही है ये, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आते, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते ना, तो हमें लगने लगता है यार मजा નથી આવી, पर તમારી મજા માટે અમે છેદ નહીં. We are there to make you understand the concept. This is not a movie which is going on. We are there to make you understand the concept. So when you are not getting a concept, be open, be clear, be loud in the classroom itself.
to the respective faculty itself that you are asking a question that, sir, I didn't got this. But when you are asking ना, तो ऐसा नहीं, एक बार repeat करो ना जी. This is not an approach which you should have to the faculty. Repeat नहीं. You need to ask a question कि सर ये concept समझ में नहीं है. मतलब मैं ये understand किया हूँ, क्या ये सही है? That is an approach. अब ऐसा आपको करना ही चाहिए क्योंकि ये कुछ ऑनररी क्लास नहीं चल रहा है ना. यू आर पेइंग फीस, योर पेरेंट्स आर पेइंग फीस टू अस. सो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक, अगर लगा कि ये थोड़ा फास्ट हो गया सर, इसको कुछ और एग्जांपल देके भी हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे बिकॉज उसको मुझे समझ में नहीं आया, तो ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर फैकल्टी विल अंडरस्टैंड कि अच्छा इन दोनों को शायद कुछ गड़बड़ हुई है, तो पूछ ही लेते हैं. लेकिन बहुत बार ना जब तुम्हारा एक्सप्रेशन मोनालिसा वाला होता है ना, whether you are happy or whether you are sad, we are not able to understand, तो डाउटफुल होता है. और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है ना, मेरे क्लासरूम में मतलब 10 साल का ऑब्जर्वेशन. धवल भाई, इफ आई एम दैट हैपन टू यू आल्सो नो, तो सबसे ज्यादा सर हिलाता है ना क्लासरूम में. उसको समझ में नहीं आया, he just wanted me to get motivated. हिंदी में सुन रहा हूँ तुम्हें, तो ये नहीं चाहिए मुझे. हमें क्या चाहिए? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. और हमें ये लीगेसी ऑफ 100% रिजल्ट मेंटेन करनी है. और ये 90% केस में है, जो फाउंडेशन से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो 90% से ऊपर है ये रेशियो कि जो सीए में बन जाते हैं. तो जो इंटर में फिल्ट्रेशन होता है ना, 70% और 30% जो फेल हुए हैं, वहां पे भी ये फाउंडेशन वाले तो क्रैक कर ही लेते हैं. तो when you are joining a foundation, that itself is a sign that there are 90% chance that you become CA. लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये लाइफ ऑटो पायलट पे नहीं चढ़ती है. आपको भी हमारे साथ उतनी ही डेडिकेशन से, शिद्दत से मेहनत करनी है. सो वी आर देयर फॉर यू. यू प्लीज डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द रिस्पेक्टिव फैकल्टी. और फिर भी अगर कुछ है तो धवल सर है, मैं हूं. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. फाइन. एनीवन हैज एनी डाउट? देवांग? Yes, sir. I didn't ask you. So, what do you want to do? Why you join CMA? हेलो. Hello. तू सोच के रख, नेक्स्ट वीक तक आंसर देगा, चलेगा? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस. आ रहा है सर वो. क्या बोला? आवाज होती है ना तू वडोदरा? हाँ, आवाज आ रहा है सर. बस बस, तो तब मिल लेंगे. फाइन. एनीवन हैज anything to share? So then you can share this. Any doubt, any questions, any difficulties, any problem? You all are comfortable with this all demo sessions? Huh? And you have to keep a faith in me. मैंने बोला ना, 3 लोग ही तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए इंटरेस्टेड होते हैं लाइफ में, मदर, फादर एंड टीचर. अभी तुमने ना घर पे किसी बच्चे को ना, बहुत छोटा बच्चा है जिसको तुम्हें पढ़ाना है, और तुमने उसको पढ़ा दिया और उसने लिख भी लिया 1, तो लगभग पूरी सोसाइटी में जाके तुम बोलोगे इसको मैंने पढ़ाया, स्टार्टेड लर्निंग, अब वो खुद लिख रहा है 1, या बोल रहा है ABCD बोल रहा है. होता है ना? वहां तुम भी टीचर बने, कितना हैप्पीनेस होता है. सेम हैपेंस टू अस बिकॉज दिस इज समथिंग, लास्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, एजुकेशन. उसका ये लास्ट चैप्टर है. अब ये लास्ट चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा, कैसे कंक्लूड होगा, उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा आने वाला लाइफ का चैप्टर. तो ना हम लोग बहुत सीरियस हैं इसके लिए, और हम चाहते हैं तुम सीरियस भी मत हो जाओ, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उस पर 100% फेथ रख के हम जो बोलते हैं वो थोड़ा करो. ऑटोमेटिक थिंग्स विल गेट सॉर्टेड. फाइन. थैंक्स अगेन. विल मीट नेक्स्ट वीक. फाइन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय. एजुकेशन नहीं ना दोस्तों.